Hello students, today we'll be studying a very important chapter, that is nationalism in India. So I hope you are preparing for your SST exam. So today's live session will definitely help you in your preparation. So let's discuss some detailed notes. The First World War, Khilafat and non-cooperation. In India, the growth of modern nationalism is connected to the anti-colonial movement. Due to colonialism, many different groups shared bonds together, which were forged by the Congress under Mahatma Gandhi. The war created a new economic and political situation in the years after 1919. Income tax introduced and the prices of custom duties were doubled between 1913 and 1918, which led to a very difficult life for common people. In 1918-19, crops failed in India, resulting in shortage of food accompanied by an influenza epidemic. At this stage, a new leader appeared and suggested a new mode of struggle. तो यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत और असहयोग आंदोलन पर प्रकाश डाला गया है. इन इंडिया द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इज कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट. तो जैसे आपको पता है कि भारत ब्रिटिश की एक कॉलोनी थी, तो भारत में मॉडर्न नेशनलिज्म का जो ग्रोथ हुआ वो शुरू हुआ जब एंटी कॉलोनियल मूवमेंट स्टार्ट हुआ. ड्यू टू कॉलोनियलिज्म मैनी डिफरेंट ग्रुप्स शेयर्ड बॉन्ड टुगेदर. तो ब्रिटिश सरकार जो कि एक दमन और देश को जो उन्होंने बिल्कुल गुलाम बना दिया था, तो इससे जो विभिन्न संगठन हैं और जो यहाँ की जनता थी वो त्रस्त थी और वो एकजुट हो गए. और इन सब में इन सब का जो प्रतिनिधित्व, इन सब का जो एज ए लीडर जो उभर के आए वो महात्मा गांधी जी थे. उन्होंने ही सबका मार्गदर्शन करा. The war created a new economic and political situation in the years after 1919. तो 1919 के बाद जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी, इकोनॉमिक सिचुएशन थी, तो उसमें आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिला. इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस एंड द प्राइसेस ऑफ कस्टम ड्यूटीज वर डबल्ड बिटवीन 1913 एंड 1918. तो इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस करा गया और जो कस्टम ड्यूटीज थी वो दुगनी हो चुकी थी. तो विच लेड टू वेरी डिफ़िकल्ट लाइफ फॉर कॉमन पीपल. तो इससे जो सामान्य जो जनता थी, जो आम आदमी था, तो उसके जीवन को बहुत ही प्रभावित करा और उसके लिए जीवन चला पाना भी बहुत मुश्किल हो गया था. इन 1918-19 क्रॉस फेल्ड इन इंडिया, रिजल्टिंग इन शॉर्टेज ऑफ फूड अकम्पेनिड बाय इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक. तो 1918-19 में जो फसल थी, तो भारत में फसल एक तरह से बहुत ही नुकसान हो गया था और जो पैदावार थी वो अच्छी नहीं थी, तो जिससे एक शॉर्टेज ऑफ फूड की स्थिति बन गई थी. साथ ही साथ इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक भी देखने को मिला, तो स्थिति और भी दयनीय हो गई थी. एट दिस स्टेज अ न्यू लीडर अपीयर्ड एंड सजेस्टेड अ न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल. तो इस समय कई सारे लीडर उभर के सामने आए और जो ये संघर्ष चल रहा था, तो उसके लिए उन्होंने अपने अपने मॉडल, अपने अपने नए तरीके सजेस्ट करे. द आइडिया ऑफ सत्याग्रह. इन जनवरी 1915 महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड स्टार्टेड द मूवमेंट सत्याग्रह. तो
1915 में महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आ गए और उन्होंने सत्याग्रह का रास्ता अपनाया और सबको सत्याग्रह के लिए प्रेरित करा। सत्याग्रह emphasized the power of truth and the need to search for truth. According to Mahatma Gandhi, people can win a battle with non-violence, which will unite all Indians. In 1917, he traveled to Champaran in Bihar to inspire the peasants to struggle against the oppressive प्लांटेशन सिस्टम। तो 1915 में महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आ गए और उन्हें सत्याग्रह का रास्ता सभी को दिखाया। सत्याग्रह एम्फसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। तो सत्याग्रह ने जो सत्य है उसकी जो ताकत है उसका एहसास सबको दिलाया। तो महात्मा गांधी जी के अनुसार उन्होंने ये बताया कि जो लोग हैं, जो ये लड़ाई चल रही है, जो संघर्ष चल रहा है, उसको अहिंसा के रास्ते पर चलकर और यूनाइटेड तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। 1917 में वे चंपारण गए, बिहार में चंपारण गए और वहाँ उन्होंने किसानों, जो किसान थे, उनको इंस्पायर करा टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेशन प्लांटेशन सिस्टम। तो वहाँ पर जो खेती हो रही थी और जो किसानों के साथ अन्याय हो रहा था, तो उन्होंने किसानों का मार्गदर्शन करा। इन द सेम ईयर ही ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट्स ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात। तो उसी साल उन्होंने खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो कि गुजरात में है, तो वहाँ पे सत्याग्रह करा और सपोर्ट ताकि वो किसानों को अपना समर्थन दिया। इन 1918 महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह मूवमेंट अमंग्स कॉटन मिल वर्कर्स। तो यहाँ पर भी उन्होंने सत्याग्रह करा। अब हम डिस्कस करेंगे रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट पे क्वेश्चन आ सकता है आपका, तो इसको देख लेते हैं। इन 1919 महात्मा गांधी लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द proposed Rowlatt Act. The act gives the government enormous powers to repress political activities and allowed detention of political prisoners without trial for 2 years. तो रॉलेट एक्ट में ऐसा क्या था, तो इसको जानते हैं। तो रॉलेट एक्ट के अनुसार जो गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिशर्स थे, जो गवर्नमेंट थी, तो उनके पास बहुत सारी पावर आ जाती थी। तो इसमें क्या था कि जो भी राजनीतिक गतिविधियां हो रही थी और तो किसी भी गतिविधि जो हो रही थी तो उसको दबाने के लिए ये रॉलेट एक्ट लाया गया। और जो इन घटनाओं में पॉलिटिकल ये जो एक्टिविटीज थी इसमें जो इन्वॉल्व थे, तो उनको बिना किसी ट्रायल के ही कैद करने का इसमें ऑर्डर था। The British government decided to clamp down on nationalists by witnessing the outrage of the people. तो मेनली जो भी देशभक्त थे तो और जो पॉलिटिकल लीडर थे जो देश हित में कार्य करना चाहते थे, तो उन पर अंकुश लगाने के लिए रॉलेट लाएगा। ऑन अप्रैल 10 पुलिस इन अमृतसर फायर्ड ऑन अ पीसफुल प्रोसेशन विच प्रोवोक्ड वाइड स्प्रेड अटैक ऑन बैंक्स, पोस्ट ऑफिस एंड रेलवे स्टेशन। तो 10 अप्रैल को जो पुलिस थी उन्होंने अमृतसर में क्या करा, एक पीसफुल, एक शांतिपूर्ण जो वहाँ पर एक बैठक चल रही थी, तो उस पर फायर कर दी गई। तो इसका नतीजा ये हुआ, कई जगह हिंसा भड़क गई। मार्शल लॉ वाज इम्पोज एंड जनरल डायर टू कमांड। तो इसके बाद ये मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया और उसका जो कमांड संभाली वो जनरल डायर ने संभाली। ऑन 13 अप्रैल द जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। तो 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग की दुखद घटना हुई। अ लार्ज क्राउड गैदर्ड इन द जलियांवाला बाग वेयर अ फ्यू पीपल केम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट न्यू रिप्रेसिव मेजर्स वाइल सम कम टू अटेंड द एनुअल बैसाखी फेयर। जनरल डायर ब्लॉक्ड ऑल द एग्जिट पॉइंट्स एंड ओपनड फायर on the crowd, killing hundreds. After the Jallianwala Bagh massacre, people
became furious and went on strikes, clashes with police, and attacks on government buildings. Mahatma Gandhi had to call off the movement as it was turning into a violent war. तो पूरे देश में जो इस घटना के विरोध में कई सारे जगह स्ट्राइक करी गई, पुलिस के साथ क्लैशेस हुए, गवर्नमेंट बिल्डिंग पर अटैक हुए। तो इतनी हिंसा को देखते हुए गांधी जी ने इस मूवमेंट को बंद करने का आग्रह किया। महात्मा गांधी then took up the खिलाफत issue by bringing Hindus and Muslims together. The First World War ended with the defeat of Ottoman Turkey. In March 1919, a Khilafat committee was formed in Bombay. In September 1920, Mahatma Gandhi convinced other leaders of the need to start a non-cooperation movement in support of Khilafat as well as for Swaraj. Why non-cooperation? According to Mahatma Gandhi, British rule was established in India with the cooperation of Indians. Non-cooperation movement is proposed in stages. It should begin with the surrender of titles that the government awarded and a boycott of civil services, army, police, courts and legislative councils, schools and foreign goods. After many hurdles and campaigning between the supporters and opponents of the movement, finally in December 1920, the non-cooperation movement was adopted. Differing strands within the movement. In January 1921, the non-cooperation Khilafat movement began. In this movement, various social groups participated, but the term meant different things to different people. The movement in the towns. The middle class started the movement and thousands of students, teachers, headmasters left government-controlled schools and colleges. Lawyers gave up their legal practices. In the economic front, the effects of non-cooperation were more dramatic. The production of Indian textile mills and handlooms went up when people started boycotting foreign goods. However, this movement slowed down due to a variety of reasons such as khadi clothes are expensive, less Indian institution for students and teachers to choose from. So they went back to government schools and lawyers joined back government courts. तो ये सारा घटनाक्रम देखने को मिला असहयोग आंदोलन में, नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट में। Rebellion in the countryside. The non-cooperation movement spread to the countryside where peasants and tribals were developing in different parts of India. The peasant movement started against talukdars and landlords who demanded high rents and a variety of other cesses. It demanded reduction of revenue, abolition of beggar and social boycott of oppressive landlords. Jawaharlal Nehru in June 1920 started going around the villages in Awadh to understand their grievances. In October, he along with few others set up the Awadh Kisan Sabha, and within a month 300 branches had been set up. In 1921, the peasant movement spread and the houses of talukdars and merchants were attacked, bazaars were looted and grain boards were taken over. In the early 1920s, a militant guerrilla movement started spreading in the Godam hills of Andhra Pradesh. The government started closing down forest areas due to which their livelihood was affected. Finally, the hill people revolted, which was led by Alluri Sitaram Raju, who claimed that he had a variety of special powers. Swaraj in the plantations. For plantation workers in Assam, freedom meant right to move freely in and out and retaining a link with the village from which they had come. Under the Inland Immigration Act of 1859, plantation workers were not permitted to leave the tea gardens without permission. After they heard of the non-cooperation movement, thousands of workers
left the plantations and headed home. But unfortunately, they never reached their destination and were caught by the police and brutally beaten up. Towards civil disobedience. In February 1922, the non-cooperation movement was withdrawn because Mahatma Gandhi felt that it was turning violent. Some of the leaders wanted to participate in elections to the provincial councils. Swaraj Party was formed by C.R. Das and मोतीलाल नेहरू. तो ये पूछा जा सकता है कि जो स्वराज पार्टी थी वो किसने बनाई, तो इसका आंसर है C.R. दास एंड मोतीलाल नेहरू. In the late 1920s, Indian politics again shaped because of two factors. The first effect was the worldwide economic depression, and the second effect was the falling agricultural prices. The Statutory Commission was set up to look into the functioning of the constitutional system in India and suggest changes. In 1928, Simon Commission arrived in India and it was greeted by the slogan "Go Back Simon." In December 1929, under the presidency of Jawaharlal Nehru, the Lahore Congress formalized the demand of Purna Swaraj. In 1929, under the presidency of Jawaharlal Nehru, the Lahore Congress formalized the demand of Purna Swaraj और फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया. तो इसमें कई क्वेश्चन छिपे हुए हैं कि दिसंबर 1929 किसकी प्रेसिडेंसी में, जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंसी में, लाहौर कांग्रेस फॉर्मलाइज. तो लाहौर में कांग्रेस ने फॉर्मलाइज करा क्या, डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज, फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया. इट वॉज डिक्लेयर्ड दैट 26 जनवरी 1930 वुड बी सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे. सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. तो अभी डिस्कस करते हैं. ऑन 31 जनवरी 1930, Mahatma Gandhi sent a letter to Viceroy Irwin stating 11 demands. Among the demands, the most stirring of all was the demand to abolish the salt tax, which is consumed by the rich and the poor. The demands needed to be fulfilled by 11 March, or else Congress would start a civil disobedience campaign. The famous Salt March was started by Mahatma Gandhi, accompanied by 78 of his trusted volunteers. तो जो सॉल्ट मार्च थी, तो महात्मा गांधी जी ने उसको स्टार्ट कराया था. तो उसमें उनके साथ कितने वॉलंटियर्स थे ये पूछा जा सकता है. तो 78 of his trusted volunteers. The march was over 240 miles from Gandhiji's ashram in Sabarmati to the Gujarat coastal town of Dandi. तो जो ये डांडी यात्रा थी, डांडी मार्च थी या जो सॉल्ट मार्च थी, ये कितनी दूरी तय करी, तो 240 माइल्स इसमें बताया गया है. और ये कहाँ से कहाँ तक हुई, ये गांधी जी के जो आश्रम था साबरमती में, तो गांधी जी आश्रम इन साबरमती से गुजरात के कोस्टल टाउन डांडी तक यह मार्च चली थी जो 240 माइल्स थी. ऑन 6 अप्रैल ही रीच डांडी एंड सेरेमोनियली वायलेटेड द लॉ. तो 6 अप्रैल को डांडी पहुँचे और एक विधिवत तरीके से वहाँ पे इस नियम को तोड़ा गया. मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर, तो नमक बनाया गया. तो दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. द मूवमेंट स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड एंड सॉल्ट लॉ वाज ब्रोकन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. फॉरेन क्लॉथ वाज बॉयकॉटेड, peasants refused to pay revenue, and in many places forest law was violated. In April 1930, Abdul Ghaffar Khan, a devout disciple of Mahatma Gandhi, was arrested. Mahatma Gandhi was arrested a month later, which led to attacks to all structures that symbolized British rule. By witnessing the horrific situation, Mahatma Gandhi decided to call off the movement and entered into a pact with Irwin on 5 March 1931. तो गांधी इरविन पैक्ट, तो ये डेट याद रखनी है, 5 मार्च 1931. गांधी इरविन पैक्ट, गांधी जी कंसेंटेड टू पार्टिसिपेट इन अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन. तो गांधी जी ने ये अपना कंसेंट दे दिया कि वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि लंदन में होने वाली है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे. व्हेन द कॉन्फ्रेंस ब्रोक down, Mahatma Gandhi returned to India. Disappointment
disappointed and relaunched the civil disobedience movement. तो फिर दोबारा से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की गई. इट कंटिन्यूड फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर बट बाय 1934 इट लॉस्ट इट्स मोमेंटम. हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट. The Patidars of Gujarat and the Jats of Uttar Pradesh were active in the movement. They became enthusiastic supporters of the civil disobedience movement. But they were deeply disappointed when the movement was called off in 1931. So when the movement was restarted in 1932, many of them refused to participate. The poorer peasants joined a variety of radical movements, often led by socialists and communists. To organize business interests, the Indian Industrial and Commercial Congress in 1920 and the Federation of the Indian Chamber of Commerce and Industries (FICCI) in 1927 was formed. तो ये डेट पूछी जा सकती है कि इंडियन इंडस्ट्रियल कमर्शियल कांग्रेस इन 1920 और जो फिक्की है फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज 1927 में फॉर्म हुई. द इंडस्ट्रियलिस्ट अटैक्ड कॉलोनियल कंट्रोल ओवर द इंडियन इकोनॉमी एंड सपोर्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट when it was first launched. Some of the industrial workers did participate in the civil disobedience movement. In 1930 and 1932, railway workers and dock workers were on strike. Another important feature of the civil disobedience movement was the large-scale participation of women. तो महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ के इसमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भाग लिया. But for a long time, Congress was reluctant to allow women to hold any position of authority within the organization. The limitations of civil disobedience. तो क्या limitations थी इसको डिस्कस करेंगे. दलित्स addressed as untouchables were not moved by the concept of Swaraj. Mahatma Gandhi used to call them Harijans or the children of God, without whom Swaraj could not be achieved. He organized satyagraha for the untouchables, but they were keen on a different political solution to the problems of the community. They demanded reserved seat in educational institution and a separate electorate. Dr. B.R. Ambedkar, who organized the Dalits into the depressed classes association in 1930, clashed with Mahatma Gandhi at the second round table conference by demanding separate electorates for Dalits. The Pune Pact of September 1932 gave the depressed classes, later to be known as the scheduled caste, reserved seats in the provincial and central legislative council. After the decline of the non-cooperation Khilafat movement, Muslims felt alienated from the Congress, due to which the relations between Hindu and Muslims worsened. Muhammad Ali Jinnah was willing to give up the demand for separate electorates if Muslims were assured reserved seats in the Central Assembly and representation in proportion to population in the Muslim-dominated provinces. Nevertheless, the hope of resolving the issue at the All-Parties Conference in 1928 disappeared when M.R. Jayakar of the Hindu Mahasabha strongly opposed efforts at compromise. The sense of collective belonging. Nationalism spreads when people begin to believe that they are all part of the same nation. History and fiction, folklore and songs, popular prints and symbols all played a part in the making of nationalism. Finally, in the 20th century, the identity of India came to be visually associated with the image of Bharat Mata. Bankim Chandra Chattopadhyay created the image, and in the 1870s he wrote Vande Mataram as a hymn to the motherland. Rabindranath Tagore Avindranath, it's not a Ravindra, it's Abanindranath Tagore painted his famous image of Bharat Mata portrait as a ascetic figure. She is calm, composed, divine and spiritual. In late 19th century India, nationalists began recording folk tales sung by bards, and they toured villages to gather folk songs and legends. During the Swadeshi movement in Bengal, a tricolor flag, red, green and yellow,
was designed, which had 8 lotuses representing 8 provinces of British India and a crescent moon representing Hindu and Muslims. By 1921, Gandhiji designed the Swaraj flag, a tricolor red, green, and yellow, white, and had a spinning wheel in the center, representing the Gandhian ideal of self-help. Conclusion: in the first half of the 20th century, various groups and classes of Indians came together for the struggle of independence. The Congress, under the leadership of Mahatma Gandhi, attempted to resolve differences and ensure that the demands of one group did not alienate another. In other words, what was emerging was a nation with many voices wanting freedom from the colonial rule. तो एक टाइमलाइन हम इसमें देख लेते हैं जो कि आज लास्ट टॉपिक रहेगा आज का, और ये टाइमलाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनवरी 1915 महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो 1915 में महात्मा गांधी जी स्वदेश आ गए। 1916 गांधी जी ट्रैवल टू चंपारण टू इंस्पायर पेजेंट्स अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। तो 1916 में गांधी जी ने ट्रैवल करा, कहाँ गए गांधी जी? चंपारण गए और वहाँ के किसानों को उन्होंने उनको प्रेरित करा जो वहाँ पर ऑपरेसिव प्लांटिंग सिस्टम था उसके अगेंस्ट। 1917 गांधी जी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। तो 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जो आंदोलन हुआ, ये आपको खेड़ा जो सत्याग्रह था गुजरात में, तो ये उन्होंने ऑर्गेनाइज करा। 1918 गांधी जी वेंट टू अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज सत्याग्रह अमंग कॉटन मिल वर्कर्स। 1918 to 19 distressed उत्तर प्रदेश पीजेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय बाबा रामचंद्रा। 1919 गांधी जी लॉन्च सत्याग्रह अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग इंसिडेंट। तो ये इंपॉर्टेंट डेट है, 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग इंसिडेंट। मार्च 1919 खिलाफत कमेटी फॉर्म्ड। सितंबर 1920 गांधी जी कन्विंस कांग्रेस कलकत्ता सेशन फॉर अ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। December 1920 non-cooperation program was adopted by Congress in Nagpur. January 1921 non-cooperation खिलाफत movement began. October 1920 Audh Kisan Sabha. 6 January 1921 police firing at peasants in Raebareli. 1920 the militant guerrilla movement spread in Godam Hills, Andhra Pradesh. 1922 चौरी चौरा violence. तो चौरी चौरा 1922। 11 फरवरी 1922 गांधी जी डिसाइडेड टू विड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। 1924 अलूरी सीताराम राजू अरेस्टेड एंडिंग अ 2 years आर्म्ड ट्रैवल स्ट्रगल। 1927 फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज वॉज फॉर्म्ड। 1928 साइमन गो बैक साइमन मूवमेंट। 1929 लॉर्ड इरविन अनाउंस अ वैग्यू ऑफर ऑफ Dominion status for India. 1930 Dr. B.R. Ambedkar established Depressed Classes Association. November 1930 January 1931 First Round Table Conference. September to December 1931 Second Round Table Conference. November December 1932 Third Round Table Conference. December 1929 important date है, the Purna Swaraj was formalized Lahore Congress. 26 January 1930 declared to be celebrated as the Independence Day but got very little attention. 31 January 1930 Gandhiji sent a letter of Viceroy Irwin stating 11 demands. 12 March 1930 Salt March और डांडी मार्च और डांडी सत्याग्रह और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड। तो 12 मार्च 1930 ये डेट याद रखनी है। 6 अप्रैल 1930 सॉल्ट मार्च एंडेड। 6 अप्रैल 1930 सॉल्ट मार्च एंडेड। अप्रैल 1930 Abdul Ghaffar Khan got arrested. May 1930 Mahatma Gandhi got arrested. 5 March 1931 Gandhi Irwin Pact. 23 March 1931 Bhagat Singh Rajguru Sukhdev were sentenced to death. 23 March 1931 December 1931 Gandhi ji went to London for a conference but returned disappointed. 26 September 1932 Pune Pact signed between Dr. Babasaheb Ambedkar and Mahatma Gandhi. Civil disobedience movement relaunched. 1932 में हुआ था ये। 1906 मुस्लिम लीग इस्टेब्लिश्ड। 1928 1928 डेथ ऑफ लाला लाजपत राय। 1935 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। 8 अगस्त 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च। तो आई होप
आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पर रिवाइज करने का मौका मिला होगा। तो चैनल में बने रहिए, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और कल की क्लास में हम कुछ और चैप्टर रिवाइज करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अपने जो आपकी मेहनत है उस पर भरोसा करिए और कंटिन्यूस हार्डवर्क करते रहिए। सफलता आपके कदम चूमेगी और जो आपका पेपर है तो बहुत ही अच्छा जाएगा, ये मेरी आशा है। तो आज का जो सेशन है यहीं पर मैं एंड करता हूँ। थैंक यू।